Hello, students. So, right now in our chapter of thermodynamics, lecture 7, we are going to discuss about an important derivation, that is expansion work. Basically, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि how is work calculated if a gas is expanding. अब सबसे पहले अभी तक हम लोग ने जो चीजें की हैं, पहले उनको एक consolidated व्यू में लेके आते हैं and then we'll start with the discussion further. Till now, we have said that expansion work, or rather any kind of work, it is arised or it is due to the change in the volume. अगर आपका गैस expand होता है या तो आपका गैस compress होता है, तो yes, you will say that a work has been done either by the system or by the surrounding. Okay. Then we also discussed that if you're doing compression, अब compression कब होगा? Compression तब होगा जब the pressure of gas is less than the pressure outside. Therefore, the surrounding is doing work in that case. So over here, surrounding does the work on the system and the work done has a positive sign. ये भी हम जान चुके हैं. Similarly, अगर expansion हुआ, so the system does the work on the surrounding and work done has a negative sign in this case. Up. Let me just put down a very simple understanding for you and then आगे की बातें करते हैं. Over here, मान लो कि this is P gas and P external. I have a gas enclosed right now. Obviously, the pressure of gas is more than the pressure external because we are talking about external work or expansion work, sorry. This is my initial setup. Yeah, this is my initial position of the piston. अब क्या होगा? This becomes my final piston position. अच्छा, meaning क्या है इसका? Over here, from the diagram right now, we can definitely say कि expansion हुआ है. कैसे? So पहले piston बहुत नजदीक था, or rather I would say piston was towards the left hand side and now it has started moving towards the outside portion. That means the pressure of gas is more than the pressure of atmosphere. ये पहली चीज. अगर आप इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हो, लेट्स से अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट इज द इनिशियल पोजीशन, सेकंड इज द फाइनल पोजीशन. तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन पे प्रेशर वाज P1 and final position पे pressure was P2. Similarly, volume was V1 for the initial position and volume was V2 for the final position. अब अगर मैं बोलूं कि see, right now we are talking about a process which is obviously a quasi static process, meaning a process which is happening in very small, you can say, by changing very small pressure values or very small work values, right? Therefore, अगर मैं यहाँ पे एक intermediate position draw करने की कोशिश करूं, तो I could say कि मेरे को एक intermediate position somewhat like this मिल जाएगी. यहाँ पे let's say that ये जो distance cover किया गया है piston का, that is a very small distance. Let's say this distance is dx. Okay, so for a very small distance dx, obviously the work done will also be a very small value, dw, है ना? So over here what I can say कि जब आपका intermediate position ऐसा आया हुआ था, तब आपने क्या determine किया? तब आपने work determine किया, but then this work was determined in a quasi static process. अब let's suppose you are talking about work, then एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, that work is always done in the presence of an opposing force. Okay, जब तक opposing force नहीं होगा तब तक work हो ही नहीं सकता. ये हमने पहले भी discussion किया है, probably in second or third module. Okay, that if you want to do some work, आपके पास एक opposing force तो होना चाहिए जिसके against आप work करोगे. अगर opposing force ही नहीं है तो work क्यों करना, है ना? So work is always done against the opposing force. And right now हम कौन से work के बारे में बात कर रहे हैं? So we are talking about a very small amount of work which is dw. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए डेफिनेटली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन ऑफ पिस्टन, मूवमेंट ऑफ पिस्टन जो है, वो भी एक बहुत स्मॉल पोजीशन होगा या वो भी एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा. लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx. सो dx इज रिलेटेड टू द वर्क डन. हम इस dx की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, our ideology right now is to find out the value of that dx, that very small amount of work which is done when the pressure was increased or the pressure was decreased
by very small values. Right now हम लोग expansion कर रहे हैं, मतलब pressure of gas must be more as compared to pressure of the atmosphere. अब यहाँ पे हम कुछ assumptions लेके बात करते हैं. First of all, let's assume that the area of cross section for the piston was A and the displacement is dx. जैसे हमने पहले डायग्राम में हम लोग ने मार्क किया, dx is the displacement, a very small displacement. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि now what is the volume change, then the volume change is dv, and definitely the change in volume will be given by dv equals to dx into a, where a is the area of cross section, dx is nothing but the displacement, which is a very small displacement carried out by the piston. Further, हमें ये भी पता है कि अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, आई कैन सिंपली राइट इट एज व्हाट, प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. Therefore, what is the force बच्चा? Force becomes pressure external into A. अब ध्यान से देखना, आपने ये बोला that the work is always done in oppose to what? In oppose to some opposing force, right? तो अगर आप opposing force ढूंढने की कोशिश करोगे, then what I can say, dw is equal to minus f external into dx, which becomes equal to, अच्छा f external क्या है? Force external is what? P external into A. So therefore this becomes minus P external into A into dv. But A into dx, but A into dx is what? A into dx is nothing but dv. Therefore, what is the final work done? Then a work done for a very small expansion is minus P external dv. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आता है that why is that negative sign coming over there? तो ध्यान से समझना, इसको आप सबसे पहले अगर सिंपल फॉर्मेट में याद करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो कि बिकॉज एक्सपांशन हो रहा था, एक्सपांशन के लिए साइन नेगेटिव होती है, तो आपने वहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया. ओके, बट देन इफ यू जस्ट वांट टू गो इन अ बिट मोर डिटेल, देन अंडरस्टैंड, अगर आप बात करोगे तो ओवर हियर मुझे साइन इंटैक्ट रखना है. मुझे एक्सपांशन का साइन क्या चाहिए? मुझे एक्सपांशन का साइन नेगेटिव चाहिए, है ना? वर्क डन इन एन एक्सपांशन प्रोसेस इज नेगेटिव. सो अब देखो होगा क्या. अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो dx is moving towards the right hand side on the x axis. तो ये जो dx का वैल्यू होगा बच्चे, this dx का वैल्यू is definitely going to be positive. इस dx का वैल्यू क्या आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. Why? Because we are talking about dx moving towards the right. लेकिन now if you understand, if dx is moving towards right, that means dx का value is positive. Okay, so what is going to happen now? The piston will move in the opposite direction. Over here what has happened, listen. अब जब आप piston की बात कर रहे हो, let me draw the diagram once again for you. Just check. If you're talking about the piston, then piston कौन से direction में move कर रहा है during the expansion of gas? Then piston is moving in this direction. Okay, this is the direction of piston. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स कहां से लग रहा है? द अपोजिंग फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन का लग रहा है. करेक्ट, द अपोजिंग फोर्स वो जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग? देयरफॉर फोर्स एंड द मूवमेंट ऑफ पिस्टन would be in the angle of 180. अच्छा, cos 180 comes with a negative sign. So what you will get, अगर आप नेगेटिव साइन डालते भी नहीं हो तो भी आपको वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. ओके, सो सिंपल, अगर आपको बहुत सिंपलिसिटी में याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे? दैट इफ एक्सपांशन इज हैपनिंग देन नेगेटिव साइन डालेंगे, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो पॉजिटिव साइन डालेंगे. व्हाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव? बिकॉज ड्यूरिंग एक्सपांशन व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल डू द वर्क ऑन द सराउंडिंग, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन द सराउंडिंग इज गोइंग टू डू वर्क ऑन द सिस्टम. सो सिंपलिसिटी में ये याद रखेंगे दैट यस, dw is the work done during expansion. And during expansion का meaning क्या है बच्चे? During expansion means the system is doing work on the surrounding. Please ध्यान रखना है इसको. यहाँ पे कौन work कर रहा है? Let me just put it down for you. Okay, over here system does the work on surrounding.
okay, and because system is doing work on surrounding, you will put it down with a negative sign, okay. अच्छा, अब ध्यान देना, देखो, अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे 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 वर्क को साथ में जोड़ दूं, then what I would get? Then definitely I will get the total work done. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि for a quasi-static process, infinitesimally small work dW is minus P external into dV. Therefore, what would be the total work done? What is an expression for total work done? The total work done क्या होगा? Total work done would be integration of many such small works. इन सारे छोटे 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 वर्क्स को एक साथ जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, तब जाके आपको टोटल वर्क मिल जाएगा. Therefore, the formula becomes W is equal to minus P external into dV integrated from वॉल्यूम V1 टू V2. अच्छा, वो V1 टू V2 क्यों आया? V1 टू V2 इसलिए आया था बिकॉज अगर आप याद करोगे तो जो ग्राफ में आपने वॉल्यूम्स लिए थे, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम था V1, फाइनल वॉल्यूम था V2. तो जैसे ही गैस एक्सपांड होके अपने इक्विलिब्रियम प्रेशर पे आ जाएगा, आगे एक्सपांशन तो होने वाला है नहीं. सो देयरफॉर व्हाट यू विल से कि एक बार वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अचीव हो गया, प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ गया, तब तक का वर्क डन आपको ढूंढ के निकालना है. सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन अ रिवर्सिबल infinitesimally small process is minus P external into dV. The total work done in a reversible process is minus of P external into dV from V1 to V2. अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि दिस वाज द केस ऑफ वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बट व्हाट अबाउट वर्क डन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? अब ये देखते हैं. सो ओवर हियर व्हाट आई कैन से इज वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है. ओके, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मान लेते हैं एक ग्राफ है आपके पास, एंड द ग्राफ इज सॉरी, let me write it down over here. Case 1 is irreversible process. Okay, and for this irreversible process, what I have assumed, आप वैसे तो कुछ भी प्रेशर अज्यूम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी सेक के लिए let the pressure of gas be 10 atmosphere ये अज्यूम किया है. तो अगर pressure of gas is 10 atmosphere and the pressure of atmosphere, that is external pressure, is 1 atm, then what would happen? Then over here what you would get is an expansion of gas being happening. अच्छा, मान लो this was initial phase 1, या state 1 sorry, and this was state 2. Over here pressure P1, volume V1, pressure P2, volume V2. Okay, pressure P1 कितना था? Pressure was P1 was the initial pressure of the gas which was 10 atms. अच्छा, गैस तब तक एक्सपांड करता रहा जब तक उसका प्रेशर क्या ना हो गया, जब तक उसका प्रेशर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए टू द एटमॉस्फेयर. मतलब उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? उसका प्रेशर हो जाएगा 1. नाउ अंडरस्टैंड my dear students, over here the difference between the pressure that is 10 atms and 1 atm. Okay, अगर आप देखते हो यहाँ पे, sorry, if you just check, if this was your gas enclosed in a cylinder and this gas was having a pressure of 10 atms, तो यहाँ पे 10 atms था, and the external pressure was 1 atm. तो जस्ट अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे ना एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल फोर्स लगता होगा, किधर? फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, मतलब एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल फोर्स लगता रहेगा अगेंस्ट 1 atm. तो जो आपका पिस्टन है वो बहुत तेजी से बाहर निकल के आ जाएगा. Therefore, this process will be a reversible process or an irreversible process. Will it be a quasi-static process? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा ये. क्यों नहीं होगा? सो बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, and therefore this process would be a extremely fast process. And on top of that, अगर ये extremely fast process है तो definitely it will be a non quasi static process, or I can say it will be a irreversible process. Okay,
it will be an irreversible process. ठीक है, तो अब हम लोग का टारगेट ये है कि irreversible प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है. अच्छा, अब ध्यान से समझो. फर्स्ट थिंग, अगर मुझे वर्क करना है तो वर्क किसके अगेंस्ट किया जाएगा? तो वर्क वुड बी डन ओनली अगेंस्ट opposing force. What is the opposing force right now? Can I say the opposing force is nothing but the force of 1 atm? मतलब मुझे जो वर्क करना है वो 1 atm के प्रेशर के अगेंस्ट करना है. अच्छा, अब सेकेंड थिंग, ये एक्सपांशन कब तक होता रहेगा? देन एक्सपांशन विल हैपन until the pressure of gas reaches what? Until P gas becomes equal to the atmospheric pressure, that is P external, which is nothing but equal to 1 atm. मतलब कैन आई से कि अगर आपका गैस पहले 10 atm पे था एंड वो एक्सपांड करते 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 नाउ द प्रेशर हैज बिकम 1 atm, मींस कैन आई से P2 is nothing but 1 atm, or I can simply say P2 is nothing but the external pressure. देखो यहाँ पे ग्राफ पे, कैन आई से P2 is nothing but external pressure? एब्सोल्युटली यस, बोल सकते हैं, क्यों नहीं? ओके, अब देखो, सो कैन आई से कि मुझे जो वर्क करना है वो कौन से प्रेशर के अगेंस्ट करना है? P2 के प्रेशर के अगेंस्ट. ठीक है, फ्रॉम द फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लोग डिस्टेंस ग्राफ बनाते हैं, ओके, या जब हम लोग वेलोसिटी ग्राफ्स बनाते हैं, देन द एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट व्हाट? द एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है कि नहीं? तो सिमिलरली यहाँ पे भी द एरिया अंडर P2, ध्यान से सुनना, द एरिया अंडर P2, that is P external, would be nothing but what? Would be nothing but the work done. मतलब ये वाला जो एरिया है, ओके, ये पूरा एरिया मेरा वर्क डन हो सकता है, ओके. लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अंडरस्टैंड द कैच. आपने वर्क डन तो किया, बट वर्क डन एक इनिशियल वॉल्यूम से किया जो था V1, है ना? मतलब कैन आई से कि वर्क डन के लिए आपने जीरो से वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया था, आपने इनिशियल वॉल्यूम क्या कंसिडर किया था? V1. देयरफॉर अगर आपको टोटल वर्क ढूंढना है तो द टोटल वर्क शुड बी इन दिस रीजन, दैट इज फ्रॉम V1 to V2 under an external pressure or an external opposing force of P external or 1 atm. And therefore ये जो region shade किया है अभी in this graph, this shaded region is nothing but going to give you what? This shaded region is nothing but the work done. In which process? In a non-quasi-static process or an irreversible process. अच्छा, अब एक और चीज समझो. Over here, can I say this is a rectangle? ये बनता तो एक rectangle ही है ना? तो rectangle का एरिया क्या होता है? Rectangle का एरिया is nothing but what? It is length into breadth. Okay. So right now, what is the breadth of this rectangle? Then the breadth of this rectangle, can I say it is nothing but P external? जी हाँ, बिल्कुल. या P2 बोल सकते हैं इसको. Absolutely right. Hey, what is the length of this rectangle? Then length of this rectangle is nothing but V2 minus V1, है कि नहीं? Therefore अगर मुझे total work done ढूंढना है तो what I would say, देखो, so the total work done, in which process are we talking about? We are talking about an irreversible process. तो मैं यहाँ पे IR लिख रहा हूँ. So total work done is equal to nothing but the shaded region or the area of shaded region. And what is the area of shaded region? तो shaded region जो आपका था वो एक rectangle था. And therefore the area is nothing but length into breadth. What is the length? Length was nothing but P external. And what was the breadth? Then breadth was nothing but V2 minus V1. Sorry, P external was nothing but the breadth and V2 minus V1 was nothing but the length. अच्छा, अब पूरा process, was it expansion या contraction? Then ये तो expansion था.
एंड जैसे पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब जब एक्सपांशन होगा तब तक कौन सा साइन लगेगा, तब तक नेगेटिव साइन लगेगा. सो देयरफॉर व्हाट इज द टोटल वर्क डन in an irreversible process? The total work done in an irreversible process is minus P external into V2 minus V1, or I can simply say it is nothing but equal to minus P external into delta V. Okay, इसको प्लीज याद रखना. दिस इज वर्क डन इन विच प्रोसेस? इट इज वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? जब आपके पास डिफरेंस इन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर बहुत ज्यादा था, एक बहुत फंडामेंटल फोर्स पूरा लग रहा था when it was 10 atms and 1 atm. So over here, whenever you have a huge difference in pressures or huge difference in temperatures, the process that is going to happen will definitely be a irreversible process. And therefore, for a irreversible process, the area under the graph is nothing but the work done. Acha, area under the graph kahan se dekhoge? From the initial volume to the final volume. And why have we said P2 as P external? Because process of expansion तब तक होता रहेगा जब तक प्रेशर ऑफ गैस 10 atm से 1 atm नहीं बन जाए. जैसे ही प्रेशर ऑफ गैस 1 atm बन जाएगा, एक्सपांशन रुक जाएगा. एंड देयरफॉर आपको जो वर्क करना है, द अपोजिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स विल बी ओनली ऑफ हाउ मच? दिस 1 atm जो है will be surely called as what? It will be surely referred as opposing force. And therefore, what I can say is, इस वर्क के सामने जितना आपने इस फोर्स के सामने जितना आपने वर्क किया is nothing but the total work done in an irreversible process or a non-quasi-static process. So with this, we finish up the first part of calculating the work in a general expression, also calculating the work done in an irreversible process. In the next part, we'll discuss about calculating work in a reversible process. Till then, students, thank you and happy learning.